Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have discussed about the steps of agriculture, that is plugging and sowing. Now we will carry forward our topic, but before that, just revise the what are the steps for agriculture. First step is plugging, second is sowing, third is adding manures and fertilizers, then irrigation, then protection from weeds and harvesting, and then storage. So we have finished our two steps, that is plugging and sowing. What would be our next topic is that is adding manures and fertilizers. But before that, tell me that we know soil is never left uncultivated, means soil पे we used to grow any type of crop. हम उस पर कोई भी तरह की क्रॉप ग्रो करा सकते हैं. दैट इज़ लाइक फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. वी कैन ग्रो इट. So when we are growing the crops on the soil, what it takes nutrients. When it take nutrients, what will happen? The soil will become less in nutrients. This less in nutrients means deficiency of nutrients. So we want that the soil should be properly nourished with nutrients. अगर soil में properly nutrients होंगे, then only we will have a healthy plant. So for that we add some chemicals or some other items that are known as manures and fertilizers. So what is a manure? Manure is an organic matter. It is an organic matter that is used in agriculture. Manure क्या आपको एक organic matter. What do you mean by organic? Organic means which is prepared from biodegradable waste. Prepare from biodegradable waste. And biodegradable waste means that can be easily decomposed in the nature, like your vegetable peels, fruit peels, kitchen waste. They can be easily decomposed, so it is known as biodegradable waste. Moreover, it contains some main elements, that is carbon, hydrogen and oxygen, so it is known as organic matter. Now it is made from biodegradable waste. Secondly, it contains animal feces, means animal waste products, vegetable waste, waste from kitchen. Waste from kitchen can be anything except non-biodegradable one. Now next is that when we are taking the biodegradable waste, how it will prepare? We will just take a compost pit. We will take a pit, means a hole, dug in the hole, a dug in the field, or you can say a empty can, empty bucket. You just take a empty bucket, empty can, and put the vegetable waste in it, means biodegradable waste in it, and covered with sand, or for some days आप उसे cover कर दीजिए sand से कुछ दिनों के लिए. Then you will see that after some days it will convert into a slurry form, and this slurry is known as manure. Now see, you are collecting this waste, these are biodegradable waste, in a container, and after some time it will form in this form, and this contains all the nutrients in equal amount. इसके अंदर हर एक न्यूट्रिएंट इक्वल अमाउंट होगा, एंड इट विल बी हेल्दी फॉर द प्लांट्स. ये हर तरीके से प्लांट के लिए हेल्दी है. नाउ सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर? दैट दीज आर द गुड सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मीन्स इसमें बहुत अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, दैट इज माइक्रो एंड वन इज मैक्रो. मैक्रो दैट इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज, and micro that are needed in some small quantities. Now it improves soil fertility. Fertility means that it contains all the nutrients so that plant grow well. Now cost effective. What you have done, that you have taken the biodegradable waste, and these biodegradable wastes are generated from every house, so it does not need any extra cost, so it is known as cost ineffective. नाउ रिड्यूस सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन कम से कम होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, आपका सॉइल इरोजन कहता है कि टॉप मोस्ट सॉइल का रिमूव होना. इट इज सॉइल इरोजन. सो व्हेन यू आर एडिंग द मैन्योर प्रॉपरली टू द सॉइल, द प्लांट विल होल्ड द सॉइल प्रॉपरली, सो इट विल हेल्प इन reducing the soil erosion. Now improves the physical properties. Physical property means that you can see. So that means आप soil का physical property क्या है, उसका texture वो कैसे दिख रही है आपकी,
वो इंक्रीज करता है, वो इम्प्रूव करता है. एंड एरेट्स द सॉइल. एरेट्स द सॉइल मीन्स कि आप जब सॉइल को प्लगिंग करते हैं तो क्या होता है, आप उसमें क्या करते हैं, प्लगिंग के टाइम पे उसमें एरेशन जाती है. सो व्हेन यू ऐड मेन्योर्स यू विल डू एरेशन ऑल्सो. आप प्लगिंग तो हल्की सी करेंगे, लाइटली प्लगिंग करेंगे, सो उससे क्या होगा, एरेशन इंक्रीज होगा. Improves the water because the manure contains a large quantity of humus. So humus is rich in water content, and so it will help in increasing the water content of the soil. Moreover, it helps the soil to retain more water. तो water holding capacity वो soil की increase करेगा. It helps in killing weeds. Weeds are the unwanted plants that grow with the main plant. Okay. एंड पेस्ट को किल करेगा. पेस्ट से क्या होता है, हमारी मेनली क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, तो वो उस चीज़ को भी किल करेगा. इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली. ये ईजिली ट्रांसपोर्टेड हो जाती है. नाउ व्हाट आर फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स क्या हैं आपके, मैन्योर कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड द प्रिपेयर्ड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ इट इज़ एन सिंथेटिक वन. सिंथेटिक है मीन्स कोई से सिंथेसाइज करा, एंड इट इज़ इन लैब्स. लैब्स में आप इसे सिंथेसाइज करते हैं सो दैट द प्लांट कैन ग्रो प्रॉपरली. बट इट सप्लाई वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स. सिंगल या वन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से सप्लाई करेगा. मीन्स मेन्यू कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स बट इट कंटेन्स ओनली 1 or 2 न्यूट्रिएंट्स. नाउ फर्टिलाइजर्स आर इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड. इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं तो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो. नाउ दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. यही हम बोल रहे हैं, 1 2 3 इससे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हम यूज़ नहीं कर सकते एक टाइम पे सॉइल में, बिकॉज इट लीड्स टू द डिस्टर्बिंग द सॉइल. आपकी सॉइल ख़राब हो सकती है उसमें अगर आप एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे. सो इट आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक दैट सच एज NPK. NPK इज़ अ कॉमन फर्टिलाइजर दैट इज़ नाइट्रोजन इज़ फॉर N, P is for phosphorus and K is for potassium. These are the common fertilizers. Now it helps in regaining of specific nutrients. Suppose आपके soil में nitrogen की deficiency है. Fine. So what you want that the soil should be rich in nitrogen. So you will add the fertilizer of nitrogen. So it will increase the content of nitrogen in the soil. But if you add manure over there, what will it do? That it will increase all the nutrients, not specifically nitrogen. So fertilizers are nutrient specific, but manure are not nutrient specific. It lead to soil and water pollution. Why it is soil? When you spray excess of fertilizers in the soil, it will lead to soil pollution. Secondly, when you give water to the plants, so it will flush out with the water and it will reach to the water bodies. So it will lead to water pollutions. Now, what is the difference between fertilizers and manure? First, it is an inorganic substance because it is prepared in the labs. It is an organic substance because it is biodegradable one. Chemical substance है ये. It is obtained by the decomposition of natural substance. Okay. It is prepared in factories. It is prepared in fields. Now, a fertilizer does not provide any humus. Soil को humus provide नहीं करता, but it provides a lot of humus. Now, nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium are found in large quantities. In this are not found in large quantities. ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं मिलता आपको. मैन्योर में सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटीज होती हैं, बट इट विल इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी इवेंचुअली. धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इंक्रीज करता है. एक्सेसिव यूज ऑफ इट हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे ऑब्वियसली सॉइल लेस फर्टाइल होगी, बिकॉज एक न्यूट्रिएंट तो रिच हो जाएगा बट बाकी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाएगी एंड इट विल लीड टू सॉइल इनफर्टिलिटी. एक्सेसिव यूज़ आप इसमें ज़्यादा यूज़ करिए, इससे सॉइल इनफर्टाइल नहीं होगी. इट बिकम सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. सी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वाटर में वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा. बट इट इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर एंड रिटेन्स द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मीन्स कि वाटर सॉइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. नाउ सो व्हाट वी हैव स्टडीड इज what are the steps of agriculture, that is adding manures and fertilizers, what are manures, what are fertilizers and difference between the two. So one question is which one is better, manure or fertilizer? आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेटर है और क्यों? manure बेटर है या fertilizers? That you will answer to me. That's all for today. Thank you.